Welcome to the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center. In 2004, a national level institute AMGITA has been started in the field of engineering and technology as per guidelines of All India Council for Technical Education AICTE New Delhi. AMGITA is approved by AICTE New Delhi, Gujarat State and affiliated to Gujarat Technological University Ahmedabad, which is also known as GTU. Our goal is to be an institute of generative ideas so that we remain relevant to our society. The AMGITA has always been an organization on move with continuous effort on improving its processes and to maintain its relevance to the Indian science scenario, with adding new programs in its programmatic portfolio. We strongly believe in overall development of students, so for that we provide them a different platform like state level tech fest, project fair, different sports activity, which helps students to teach teamwork and problem solving skills to get physical health benefits, boost self esteem, and reduce pressure and stress for prove their skills in distinct area. Welcome to the lecture of electrical measurements and measuring instruments. Myself, Professor Gaurang Patel from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. So today we are going to discuss the topic which is come from chapter number 4, that is the topic that is derive the bridge balance equation of Maxwell's bridge and also provide advantages and limitations of it. So students, in this lecture we will see how we can measure the unknown inductance through the Maxwell's bridge, and we also discuss the how to plot the phasor diagram to finding out the unknown inductance, and we also derive the equations for the Maxwell's bridge and how to balance this bridge. Okay, so we will start this theory. So let's begin. So students, today we are going to learn about the bridge balance equation of Maxwell's bridge, and we will also discuss the advantages and limitations of this question. Okay, so first of all we will start, that is this method is very suitable for accurate measurement of medium range self inductances, and in this method the unknown inductance is determined by comparison with a variable standard self inductance. Okay, so how it will going to be work, I will explain to you in I try to explain in very easy languages. Okay, so by this bridge, or you can say by the Maxwell inductance bridge is an alternating current bridge, and this bridge measures the value of inductance by comparing it with a standard value of inductance. Okay, so in this lecture we will study its circuit diagram, how we can calculate the inductance from it, and then we will see its phasor diagram also. So इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, ओके, फिर उस सर्किट डायग्राम से उसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, देन वी विल सी हाउ द इक्वेशन इज गोइंग टू बी formed. Okay, so let's start with our topic first of all. So this Maxwell inductance bridge, it is invented by the scientist Maxwell. जो Maxwell नाम का जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था. ओके, एंड इट इज द मोस्ट बेसिक एंड सिंपल ब्रिज in its construction, and it is used for the measurement of inductance. It measures inductance by comparing the unknown value of the inductance and is measured by comparing with the known value of inductance or a standard inductance. Okay, तो basically ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू मेजर द अननोन इंडक्टेंस. लेकिन अननोन इंडक्टेंस ये मेजर कैसे करेगा, तो कि भाई एक आपके पास नॉन इंडक्टेंस होगा जिसकी वैल्यू आपको पता रहेगी, उसके साथ वो कंपेयर करके वो अननोन इंडक्टेंस को मेजर करेगा. वो कैसे करेगा, दैट वी विल सी. ओके, नाउ this Maxwell inductance bridge, it is a type of alternating current bridge, so it is also going to consist of 4 arms, and any bridge circuited consists of 4 arms. In those 4 arms we are having 4 unknown, 4 unknown inductance, 4 impedances, that's all are connected in that 4 arms. Okay, now out of these 4 impedances we are having 3 impedances which are known to us. Now we will see, this is the circuit for the bridge. Okay,
And this circuit you can see these are the four arms: arm AB, then arm BC, then arm CD, and then arm AD. So these four arms we can see in this circuit. Just a moment. Yes, in this circuit you can see this is the arm AB, BC, CD, and AD. So in these four arms there are resistance is connected, inductance is connected, okay. Also there is a detector is connected, and there is a voltage source is connected with in this arm, okay. So when we will have our detector for detecting the balance condition of the bridge, and also an AC power supply, and this power supply is used to operate the bridge circuit, okay. So over here this is the detector, you can see this is the detector, okay, and this is the AC supply. Why we need the AC supply? To operate this bridge. अगर हमें उसको ऑपरेट करना है तो हमें सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एसी ब्रिज है तो यहाँ पे क्या रखा है हमने? एसी सोर्स रखा हुआ है, ओके। नाउ four arms detector and the AC power supply. So let us first see its circuit. And you can see this is the bridge circuit for the Maxwell inductance bridge, and you can see we are having four arms, that what I explained to you, okay. And each and every arm having the combination of resistance and inductance. So among of that, these two arms having the combination of resistance and inductance. You can see this is the combination of resistance and inductance. This R1 and L1, which is connected to AB. Over here this is the I2 and R2, but both are the variable, okay. I2 and R2 are the variable resistance which is connected with the arm AD, okay. Now this series combination or panel combination, so you can see that maybe it is a series combination of resistance and inductance, and the value of these two is unknown to us. We want to find out the value of this unknown inductance. So which are the unknown वैल्यू? ये जो है L1 हमारे पास, ये आप, ये जो मेरा कर्सर यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द कर्सर, दिस वैल्यू इज अननोन टू अस, ओके। ये वैल्यू हमारे लिए अननोन है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है कि भाई कितना इंडक्टेंस है, और इसका इंडक्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करना है थ्रू द इक्वेशन और थ्रू द बैलेंस सर्किट, ओके। नाउ for these unknown inductance in terms of the node inductance, okay, and it is a standard inductance, and also standard resistor is connected over there. There are two standard resistance is connected over here. This R3 is known as the standard resistance, and this R4 is also known as the standard resistance. And also non-inductive resistance, it is also नॉन इंडक्टिव, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इंडक्टेंस जॉइंट नहीं है, जॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम नॉन इंडक्टेंस रेजिस्टेंस से भी तरीके भी से भी जान सकते हैं, ओके। नाउ we can see in the detector which is used to obtain the balance condition of the bridge network, and in between the AC, the easy part supply is connected. This part supply is going to operate the bridge network, okay. So let us see the combination present in B. You can see over here the combination which is present over here, that is R1 and L1, L1, R2 and I2, and over there R3 and R4, okay. Now if you see further, this unknown inductance is connected in series with the resistance R, ओके। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वो भी अननोन है, और वो किसके साथ कनेक्टेड किया हुआ है? विच इज कनेक्टेड टू अननोन इंडक्टेंस L1, okay. Now we are having another branch, that is we are having the BC, okay, and over here it is a DC. You can see in the circuit diagram we are having a non-inductive resistance R3, then we have a CD, that means these are in. Also we are having unknown non-inductive resistance R for non-inductive means, okay. So pure resistance we have to run for this circuit, there is a series combination of the resistance and the inductance, but this inductance isn't standard inductance, okay. So what you have to do in our deal, we are having a variable inductance L and fixed internal resistance, okay. Over here this is the variable inductance L2 over here, and यहाँ पे ये जो स्मॉल R2 दिया गया है विच इज व्हाट, थोड़ा सा रेजिस्टेंस इस इंडक्टेंस का भी होगा, तो यहाँ पे स्मॉल R2 दिया हुआ है यहाँ पे, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 ओवर हियर, ओके।
So these all are the combination that you can be worked over here. Okay, so from that you can easily understood for the balancing of this bridge what we have to do. We must have to balance both the circuit. Okay, both the arms, that means the arm AD and BC, it should be equal, and arm AB and arm DC, it should be equal. How it is going to be work, then that what I will going to explain to you. Okay, now you can see that is unknown in the inductance can be calculated by comparing it with our non inductance L. यहाँ पे जो unknown inductance है, ये जो unknown inductance है L1, okay, then that what we can compare it with the L2 as well. तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट, उसके लिए हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई ये कैसे use होता है. Okay, now maxwell inductance is for the measurement of self inductance by comparing it with a non inductance. So now next come the, you can see over here that we can form the equation in this way. So for at a balance condition, what they are given to us, at a balance condition, that is z1 into z4 is equal to z2 into z3. अगर हमें कोई भी ब्रिज बैलेंस करना है तो ये हमारा एक वेरी वेल नोन इक्वेशन है, दैट इज z1 into z4 is equal to z2 into z3. ओके, तो फिर उससे क्या होगा कि भाई z1 into z4 is equal to z2 into z3, तो ये z1 की यहाँ पे वैल्यू लिख दी है r1 into j omega l. अब आप देख सकेंगे कि भाई z1 यहाँ पे कहाँ पे है, सो इट इज z1 you have to consider over here. Okay, this is your z1. Okay, so यहाँ पे आप इजीली इसका वैल्यू लिख सकते हैं फॉर द z1, that is r1 into j omega l1. z4 is equal to r4, ये आपका R4 है. ओके, तो R4 के लिए भी आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इंडक्टेंस तो है नहीं, तो ओमेगा वाला फैक्टर नहीं आएगा, तो सीधा आप Z4 की जगह पे R4 लिख सकते हैं. सिमिलरली फॉर Z2 इज इक्वल टू R3 आएगा, और यहाँ पे जो आपका Z1 है, Z2 है, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं j ओमेगा L2. सो इस तरह से ये इक्वेशन फॉर्म होगा. इन प्लेस ऑफ Z1 वी कैन प्लेस R1 plus j omega L1 into Z4 is equal to R4, and in place of Z2 इसकी वैल्यू क्या रहेगी, R2 plus j omega L2 into R3, क्योंकि ये जो चार वैल्यू है इम्पीडेंस की, ये कहाँ से हमने ली, Z1 Z4 और Z2 Z3 की. यू कैन इजीली see it from over here. First combination आप अगर देखेंगे, that is Z1 into Z4, that means this is your Z1 is combined with this inductance and resistance, so this plus L, so that's why we are considering omega L1. Okay, we are considering the inductance, and Z1 into Z4, so यहाँ पे कोई आपका इंडक्टेंस नहीं है, तो सीधी आप R4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे Z2 और Z3 का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो Z2 में क्या आएगा भाई कि R2 अपना रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जो ओमेगा इंडक्टेंस है वो कंसिडर करना पड़ेगा, और Z3 के लिए हम सीधा R3 पुट कर सकते हैं. सो सिंपली हमने वो वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है. नाउ व्हाट वी कैन सी, दैट इज R1 plus j omega L1 is equal to R3 by R4. सिर्फ R4 को यहाँ पे इस साइड पे हम ले गए हैं, और ये R2 plus j omega L2, इस तरह से हमने इक्वेशन को रिफॉर्म किया है. सो बाय रिफॉर्मिंग दिस इक्वेशन यू कैन सी नाउ इक्वेशन द रियल एंड इमेजनरी टर्म्स सेपरेटली वी हैव. अब आप उसको रियल एंड इमेजनरी टर्म को सेपरेटली कर दीजिए, तो फिर आपके पास क्या बचेगा कि भाई रियल टर्म में आपका जो भी रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू R3 बाई R4 इंटू R2, ये आ गया, और आपका जो इमेजनरी टर्म्स में उसमें इंडक्टेंस का पैरामीटर आ जाएगा. तो इमेजनरी टर्म्स में आपका क्या रहेगा भाई, ये j ओमेगा L1 रहेगा, और इज इक्वल टू R3 बाई R4 इंटू j ओमेगा L2. सो हमने रियल और इमेजनरी पार्ट को दोनों को सेपरेट किया, तो हमको उससे क्या मिलेगा, यहाँ से j ओमेगा आपका जो है कॉमन है दोनों में, सो इट विल बी यू कैन बी डिलीट इट और यू कैन बी कैंसल इट आउट. j ओमेगा कॉमन है यहाँ पे, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि भाई R1 की वैल्यू मिल जाएगी, R1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी R3 बाई R4 इंटू R2, दैट इज द ब्रिज बैलेंस. एंड फॉर इंडक्टेंस को ब्रिज बैलेंस करने के लिए L1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे L1 इज इक्वल टू R3 बाई R4 इंटू L2.
सो ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है R1 और जो अननोन इंडक्टेंस है L1, विच वन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि हमें भाई यही तो फाइंड आउट करना था। ओके, हमें R1 और L1 की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी। ओके, अगर R1 और L1 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आपका जो अननोन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस इक्वेशन से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं आपका जो अननोन R1 एंड L1 है उसको। ओके, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ दैट। नाउ वी विल सी over here, the value of unknown self-inductance L1 can be determined. Here it should be noted that the two inductor coils L1 and L2 are placed at a distance apart so that there is no mutual inductance. Now, next part is you can discuss the next part regarding the phasor diagram. Okay, student. So, phasor diagram यहाँ पे क्या रहेगा आपका? ये रहा आपका phasor diagram. Okay, so here is the phasor diagram. You can see this is the phasor diagram. How this phasor diagram is drawn, we can see over here. हमें भाई वोल्टेज और करंट के बीच में ये अपना साइनोसॉइडल सप्लाई हमने दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, एसी वी आर यूजिंग द एसी इनपुट सोर्स, सो उसका अकॉर्डिंग हम अपना फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे। ओके, और जब भी एसी सर्किट एसी इनपुट होता है तो जब एसी सप्लाई आप पावर देते हैं तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, और अगर सॉरी रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, और जब इंडक्टेंस में से करंट फ्लो होता है तब वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन रहेगा, वो तो हमें पता ही है। ओके, सो नाउ वी विल सी हाउ द फेजर डायग्राम इज गोइंग टू बी प्लॉट। ओके, नाउ the phasor diagram, it shows the relation between the various phases. So like we know that this circuit, because it is connected with the AC supply, so we will be there, current will be there. Okay, so to get the relationship between the voltages across every component and the current across every component. Okay, voltages across every component, that means यहाँ पे 4 आर्म्स है, 4 आर्म्स के बीच में कौन कौन से वोल्टेज आ रहे हैं भाई, कि भाई R1 और L1 पे E1 इफेक्ट करेगा, यहाँ पे E1 दैट इज द वोल्टेज, बी और सी आर्म में E3 वोल्टेज इफेक्ट करेगा, ये सी और डी आर्म में E4, और ये ए और डी आर्म में E2 वोल्टेज अफेक्ट करेगा। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये फेजर डायग्राम यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ एवरी कंपोनेंट हैव द करंट अक्रॉस इट, और यहाँ पे हमारा जो करंट फ्लो रहा है R1 और L1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है, और R2 और I2 में यहाँ पे ये I2 करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और यहाँ पे R3 और R4 में I1, R3 में I1 और R4 में I2 करंट फ्लो हो रहा है। कुछ सर्किट्स और कुछ बुक्स में यहाँ पे I1 की जगह पे आप I3 कंसिडर करेंगे, कर सकते हैं, और R4 की जगह पे आप I4 कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों करंट को भी स्प्लिट किया गया है। ओके, बट इन दिस सर्किट वी आर कंसिडरिंग I1 एंड I2 ओनली। ओके, so now we will try to plot the phasor diagram, or understood how this phasor diagram is to be come first. Okay, now to draw the phasor diagram, first of all we should know the relationship between the voltage and current, that what I already told to you. So in the inductance what happened, resistance and capacitance. So in the resistance we know that the voltage and current they are in same phase, हमें रेजिस्टेंस में तो पता है कि वोल्टेज एंड करंट दे आर इन same phase with each other. Okay, so for inductance we know that the voltage is going to lead the current by 90 degrees, and in capacitance voltage is going to lag the current by 90 degree। ये तो हम पहले सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में क्या होता है करंट और वोल्टेज के बीच में। ओके, सो बिटवीन द फेजर वोल्टेज एंड करंट, that current in the component resistance, inductance and capacitance. So to draw the phasor diagram you should remember these relationship first of all, then it will become easy for us to draw it। Okay, so let's start with the phasor diagram. Now to draw the phasor diagram, first of all we take a reference phase out, and all the other phase they will be drawn with respect to the reference phase। Okay, so we will use the current I1 over here। first of all ये जो आपकी रेफरेंस लाइन है, ओके, उस पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा करंट ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ये I1 करंट ड्रॉ करेंगे, उसको हम रेफरेंस की तरह से लेंगे। तो पहले स्टूडेंट सिर्फ इतना इमेजिन कीजिए कि ये कुछ भी पार्ट आपके पास नहीं है,
सिर्फ हमने ये रेफरेंस लाइन पे I1 ड्रॉ किया हुआ है. ओके, so first of all we are just put it the I1 over here. Okay, so you can see that the current flowing in each arm is represented over here as a I1 and I2, but you can also you can I told you that यहाँ पे आप I3 and I4 भी consider कर सकते हैं. Okay, and the arm यहाँ पे each and every arm जो दिया हुआ है that is respected to E1, E2 and E3, and so the combination of all that is given total E. Okay, so the total voltage we will see the relationship between that, and also the open and the voltage drop across D for each component. Okay, so we are taking the current I1 as our reference phase, and over here this is the current I1 we are taking as our reference phase. So let's start with each arm. In the first arm you can see that we are having a resistance, so voltage drop across this resistance will be in phase with the current. Okay, now we will start with the first arm. This is the we are talking with the first arm, that is R1. Okay, so first arm over here, that is the voltage drop across the resistance will be in phase with the current. So यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ये जो I1 है R1 है, तो ये हमने यहाँ पे इन फेज ड्रॉ किया है. ओके, सो वोल्टेज ड्रॉप I1 इंटू R1 दैट इज इन फेज ऑफ दिस. सो I1 ये अब हम आपको कर्सर दिख रहा है, ये I1 इंटू R1, तो ये हमने I1 के फेज में ड्रॉ किया क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है. ओके, नाउ यू कैन सी, but what it's again it will happen that voltage and current they are in same phase with each other, so the voltage drop across this will be, you can see, in same phase. So when you are considering voltage drop across the omega L one, okay, so the voltage drop and current they will be in same phase for resistance, and voltage is going to leave the current by 90 degree for the case of inductance. और अब जब करंट थोड़ा आगे जाएगा और इंडक्टेंस के साथ जब उसका ड्रॉप हम कंसिडर करेंगे, तो वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पे 90 डिग्री लीड कर रहा है. जब यहाँ इसका रिलेशनशिप की अगर बात हम करेंगे, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या कर रहा है, I1 इंटू ओमेगा L1 दैट इज द 90 डिग्री lead. So over here I1 into omega L1 we are considering the 90 degree lead over here. So same case में ये I2 into omega L2 के लिए भी होगा. ओके, फॉर I2 के लिए भी यही हम कंसिडर करेंगे I2 into omega L2. ओके, क्योंकि I2 हमारा कहाँ पे है, ये रहा, दिस इज द I2. ओके, दिस इज द I2. सो इस केस में भी क्या होगा, I2 into omega L2, that we will also see over here. Now we are going to draw that I and R on the same line, they are in same phase with each other, and voltage is 90 degree with it. So we'll draw a phasor diagram which is going to I1 omega. Okay, now this total voltage drop, even across this total voltage drop is equal to the sum of the voltage drop across the resistance and inductance. So it will be the R omega, that is L. So if we take the vector component, that if we take this resultant component, then that is equal to even the voltage drop. Okay, so now further you can see we are considering over here for the first case, that is the even. Now we will draw over here for the I2. ओके, करंट I2 के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं. अब I2 के केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, I2 किस में से फ्लो हो रहा है, यहाँ से R2, और ये L2 में से फ्लो हो रहा है I2. ओके, तो इस केस में आपका क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से E3 इज इक्वल टू E4. E3 के यहाँ कहाँ पे है, ये रहा आपका E3. ओके, नाउ E3 आपका जो वोल्टेज है वो भी E3 इज इक्वल टू E4 है. तो ये दोनों जो है वो इक्वल है. ओके, और E1 इज इक्वल टू E2 यहाँ पे दिया गया है. तो फिर अब आपको I2 में से क्या आएगा, अब आप यहाँ पे E1 ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको फेजर डायग्राम मिलेगा. ठीक है, नाउ हमारे पास अब दो फेजर आ गए हैं, E1 इज इक्वल टू E2. भाई ये रहा आपका E1 और ये रहा आपका E2. नाउ E1 इज इक्वल टू E2 एंड E3 इज इक्वल टू E4. सो ये रहा आपका E3 यहाँ पे और ये रहा आपका E4. अब उसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे यहाँ पे, दिस इज द रिजल्टेंट वी कैन सी ओवर हियर. सो आपको रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, एक
वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, ये रहा ये वाला। ओके, सो ओवरऑल हम इस तरह से आपका फेजर डायग्राम कंप्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा कि भाई आई वन इंटू ओमेगा एल वन विथ रेफरेंस टू आई वन, और आई टू यहाँ पे क्या है, ये रहा आपका आई टू, उसमें क्या आएगा आपका आई टू इंटू ओमेगा एल टू कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, वो भी ये रिजल्टेंट के साथ ही आएगा, दैट इज योर रिजल्टेंट। सो हाउ दिस फेजर डायग्राम इज गोइंग टू बी, you can draw easily। Okay, now for the voltage drop you can also see that is the sum of the voltage drop across the resistance part। Okay, and this resistance will be the all over, you can say this is all over inductance, you can easily detect from this, okay, from the detector। So how, that's how you can draw the phasor diagram as well। Okay, so now further you can draw this phasor diagram, as well as you can also have some given some advantages over here. What are the advantages? Now we can discuss the advantages, that is the balance equation is independent of frequency, the two balance equations are independent as well। Then third advantage is that is the scale of resistance can be calibrated to read the inductance and q value। And fourth one, that is it is useful for measurement of wide range of inductance at power and audio frequencies। And what is the disadvantage, we can say that is it cannot be used for measurement of high q values, and it is limited to measure low q values। Okay, and second one, that is it cannot be used for measurement of very low q values because of balance converge problem। Commercial maxwell bridge measure the inductance from 1 to 1000 henry with plus or 2 minus percentage of error। Okay students, so that's how you can derive easily the equation and balance the bridge with this equation for finding the value of unknown inductance and resistance, and this is the phasor diagram you can draw with the help of this figure। Okay, so in today's lecture we will uh, finish this theory over here, next part we will discuss in the next video lecture। Okay, so students, finally, as in every lecture, after completion of every lecture, I will try to give you a message that please remember turn off the light when it is not required। Okay, so please save the energy, save the electricity। Thank you very much।